सो आज आम देखा इरोजन देखा आम वेदरिंग आम देखी देते दैट फिजिकल बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। आज आम देखा इरोजन। इरोजन रे आम देखा फास्ट इरोजन कौन देन गोटे थाए आम डेनुटेशन। डेनुटेशन ना फास्ट कौन था डेनुटेशन गोटे हूँ प्रोसेस। डेनुटेशन कौन इट्स ए प्रोसेस। फास्ट रहा वेदरिंग देन इरोजन देन डिपोजिशन। यदि आम तीन टा को मिसई देबा दैट इज कॉल्ड एज डेनुटेशन। So denudation is a process involving weathering, erosion, deposition. है ना एथरा आउ गोटे जिनस ऐड करिवो weathering, erosion, transportation and deposition. Transportation and deposition 1, 2, 3, 4 and this would be 8. So it's a process. है ना weathering already हमें पढ़ी दीजिए. Now we will go through the erosion. Erosion को हमें पढ़िबा. Fine to all. Now we will go through the erosion or mass wasting or ताको हमें कौन कहबा mass wasting. Now mass wasting 2-3 types रहता है. Like one would be your slow, one would be rapid. तो mass wasting अर्थात कौन जेमती कि हमारा लैंडस्लाइड वगैरह ही था इमान को mass wasting कहा जाए. That could be mass wasting could be very rapid ही परे. It could be very rapid ही परे. It could be slow movement ही परे or it could be rapid ही परे. Either rapid, very rapid, slow एमती तीन प्रकार ही थी परे किंबा तमरो. So that this would be 3 types साधारणतः ही थे. Done. तो mass wasting रो meaning कौन ना mass wasting कहले huge amount of movement आमे जाको कहबा कि आमे कहबा जेमते कि कोन wasting of or disintegration and fragmentation of rock material due to the mechanical है पर biological है कौन सी तो simple आमे कहबा huge movement of material. Movement of materials को mass wasting बोली कुआजे. तो weathering पढ़ी छे ना erosion पई agent दरकार. That means this mass wasting should have agent. जो हमर erosion करूची erosion रो meaning कर the weathered rock will move बा movement हमें कहूचे. तो erosion means गोटे जगह आ गोटे जगह को displace है. Simple I would say erosion means displaced. Displaced. ता पई agent दरकार. तो erosion पई we need agent. That agent could be wind है परे, water है परे, wave है परे, wind either water है परे किंबा waves है परे or that could be a stream है परे. So these are the what agent of erosion. અને મને erosion કરીપારે wind જેમતી water waves stream. तो these are the agents erosion रो agent. ठीक अछि. Now we will go through the erosion. एबे erosion को मैं गोटे गोटे देखिबा. और mass wasting. तो mass wasting रो में फास्ट पॉइंट हमें देखिबा कोन लैंडस्लाइड. ऑलरेडी पढ़ा ही तुमको लैंडस्लाइड पढ़ा सरी समस्त को ना पढ़ा ही. Yes, sir. Yes, sir. लैंडस्लाइड रे में कौन पढ़ी थी लैंडस्लाइड केते बळे हुए. Any factors for the landslides you could remember. The factors we were discussing, that is the angle of slope, Heavy rain. then the strength of rock, then we were discussing the like the what natural vegetation,
That was also one of the factor. Then joints, Developmental activities. yes, developmental activities को भी हमें नहीं परिबा. Then precipitation को हमें नहीं परिबा. So these were the factors which were responsible for the landslide. Then we were also discussing the landslides. तार मु तुमको कहितली कि when the shear strength of rock is what less than the shear force, that time landslides occurs. Okay नहीं ये कथा हमें देखितले कि shear जतरे कौन force टा अधिक होइजबो और it would be greater than the shear strength, that time landslides occur. Then हमें landslide को पढ़ी थे Himalayan region रे the landslides of India कि why Kerala all this region western Ghat रे landslide देखी थे and also in the Himalayan region रे मध्य landslide हमें देखी थे हाँ कि नहीं है ना तो ये हमें Yes, sir. landslides देखी थे ठीक है जी तो landslides आपको हमें कवर कर दीजिए now landslide पर हमें landfall देखिबा that means this one was covered so we will comes to second part landfall landfall ना फॉल रो मीनिंग कौन देखो कौन सी जिनस ये लैंडस्लाइड हो कि लैंडफॉल हो तापई They follow प्रीरिक्विजिट कंडीशन substances हाँ from हियर वुड बी stereo. फ्री फॉल हियर वुड बी फ्री फॉल ये फ्री फॉल करिवो केते बळे फॉर एग्जांपल दिस वन इज ए स्टीप साइड ये पूरा हमर गोटे स्टीप साइड अछि एंड हियर इज ए बोल्डर ये गोटे बोल्डर अछि व्हिच फॉल डाउन is fall down here is fall down here the boulders are coming falling down without touching the slope ये slope को touch करो नहीं the boulders are coming and falling so this is called free fall this is called free fall है ना आपको हम कह जो free falls the boulders are coming but without touching the slope they are falling on the ground so this is called landfall this will be called landfall or rock fall or you may say rock fall done everyone no no Sir, so एगुड़ाक कौन factors of denudation or कौन? नहीं ये गोटे टाइप ऑफ इरोजन these are the type of erosion Yes, sir. mass wasting type of mass wasting but here what will happens it should have steep cliff eta tome dekhi paribo it should have steep cliff ta pura steep rahibo and this does not involve any water एटी किसी वाटर दरकार नहीं लैंड तार अपने आप खसुची does not require any water with that बुझी पड़छनी so here water is not required then we will comes to the slide landslide तो पढ़ी है ना then आसपा slump तापर आसपा slump 3 नंबर को आसपा slumping 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 रो अर्थात कोन केबे केबे तमे देखिथिबो कि जेतेबेले लैंड मूव करे केमिति मूव करते देखो सपोज एटा गोटे हमें स्लोप अछि लेट्स से गोटे स्लोप एटू किछि मटेरियल देखिबो थरे थरे कोन बे द लैंड विल स्लाइड लाइक दिस एमती स्लाइड करके बाहर की जाए है ना तो ये कॉनकेव शेप रो एमती डायरेक्ट तळ को न खसे कि किछि पोर्शन लेट्स से एटा स्लोप रो किछि पोर्शन एमिति बाहर की जाउछि द मूविंग लाइक दिस एमती कर्व है कि तो एई भलिया को कहै छै स्लम्पिंग एंड दे विल कम एंड पूरा तळ को खसी जीवनी किछि बाट किछि अलगा हि जबो सपोज एमती गोटे गैप क्रिएट है कि पुनी एठी आसी कि रहि जबो आ बुझा पड़बो यार मीनिंग सर आउ थोड़ा टिके डायग्राम बुझाई देन ओके आउ थोड़ा डायग्राम करू छै देखो तो केमथि हि थाए लेट्स से ये गोटे मो डायग्राम खोली है ना तो कोन हैला एठू सॉइल टा एठू खसीबा स्टार्ट कला है ना सो लेट्स से इट वाज द पॉइंट इट विल कम्स डाउन हियर एठी आसी कि रहि जिवो तो यार देखो सेप एमथि आसी कि एठू खसी गेला खसी कि एठी आसी कि रहि गेला बुझि परछनी आकु कहै छै स्लम्पिंग पूरा सेटू अलगा है कि पळै जवन बस किछि बाटो छाडी कि आसी पुनी डिपॉजिट है कि सेठी रहि जिवो आकु कहै छै स्लम्पिंग बुझि परछनी एठी थिला एठी आसी कि रहि गेला एठी थिला एठी आसी कि रहि गेला तो बस एमती थाको थाको भलिया रहि जिवो
ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଲମ୍ପ। ତା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି। ସେପ୍ଟା କେମିତି ରହିବ? କନକେଭ୍। ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି କନକେଭ୍ ସେପ୍ର ରହିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ସେ କନକେଭ୍। କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ୍ କେମିତି କରେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ମୁଭ୍ କରେ ନା, ତ ଆର କିଛି ସେ ଆଙ୍ଗେଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି କରିବ? ଏମିତି ମୁଭ୍ କରିବ, ଏମିତି ମୁଭ୍ କରିକି ଟିକେ ଆସିକି, ସପୋଜ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆର୍ଲିୟର ହିୟର, ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ସେଟଲ୍ ହିୟର, ତ ଏମିତି ସେପ୍ର ମୁଭ୍ କରିଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଲମ୍ପିଂ, है ना। ये साधारणतः ग्रेजुअल स्लोप रे देखाଯିବ, साधारणतः ग्रेजुअल स्लोप रे तुमको देखाଯିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଲମ୍ପ। ସ୍ଲମ୍ପର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କିଛି ବାଟ ଯାଇକି ପୁଣି ରହିଯାଇଛି। ସପୋଜ ଭାବ ଏଇଠି ଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ସ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲ୍ ହିୟର, ଏଇଠି ଆସିକି ରହିଗଲା, ଏଇଠୁ ଖସି ଆସିକି ଏଇଠି ଆସିକି ରହିଗଲା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ସେପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ଏଠି, है ना। ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି, ତ ଏଇଭଳିଆକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଲମ୍ପିଂ, SLUMP, है ना। ଦେନ୍ ଆସିବ debris slide, debris slide। ना ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେବ ଡେବ୍ରିସ୍, ଆର ମିନିଂ କ'ଣ? ସ୍ଲାଇଡ୍ ତ ମିନିଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଡେବ୍ରିସ୍ କହିଲେ ଏଠି ୱାଟର ରହିବ। ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ ଡେବ୍ରିସ୍ ଆସିବ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ୱାଟର, ଏଠି ୱାଟର ରହିବ। ଗୋଟେ ଥାଏ ଡେବ୍ରିସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍, ଗୋଟେ ଥାଏ ଡେବ୍ରିସ୍ ଫ୍ଲୋ, ଗୋଟେ ଥାଏ ମଡ୍ ଫ୍ଲୋ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖିବା, है ना। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ କ୍ରିपिଂ। ध्यान से देख, कन्फ्यूज ये बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाए, कहना दे वुड बी लुकिंग लाइक सिमिलर ना। डेब्रिस स्लाइड, डेब्रिस फ्लो, मड फ्लो, तो वाटर कंटेंट धीरे धीरे बढ़ुची। एठी वाटर कंटेंट लीस्ट, हियर वुड बी मीडियम, हियर वुड बी मैक्सिमम वाटर। जो मड फ्लो एठी मैक्सिमम वाटर, हियर वुड बी मीडियम वाटर, हियर वुड बी लीस्ट वाटर। तो दिस डेब्रिस जितने वार्ड आसिबो, मड आसिबो, they are associated with the water, they are also mass wasting but associated with water। is it fine to all? डेब्रिस फ्लोटा ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ଲାଇଡ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଡେବ୍ରିସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସ୍ଲାଇଡିଂ ବଟ୍ ୱିଥ୍ ୱାଟର। ଏଠି ୱାଟର ପ୍ଲସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବଟ୍ ୱାଟର ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, दैट इज वाई दिस इज डेब्रिस स्लाइड। कहले एथिरे बड़ बड़ बोल्डर्स, कोबल्स, मतलब मु कौन कहबाकू पूरा सेमी लिक्विड भी नुह, ताठू टिके कम, माने देखो पूरा ड्राई नुह, दिस इज नीदर कंप्लीटली ड्राई नीदर कंप्लीटली वेट, इन बिटवीन। तो ताकू हमें कौन कहबा, जेमते कि हमर विस्कोसिटी अधिक थाए, पूरा अधिक, जेम बुझ पड़छनी, तो यार विस्कोसिटी अधिक रहइबो ना, बुझा पड़िबनी। यस सर। तो से कौन करिवो, खसिक आसिबो। एथिरे कोन रॉक रहिबो, बड़ बड़ रॉक रहिबो, बट जेतरो देखो एठी वाटर कम अछि बोली रॉक रो साइज टा बड़ रहिबो। बट व्हाट विल हैपेंस टू द डेब्रिस फ्लो, डेब्रिस फ्लो रे कोन रहिबो, वाटर कंटेंट विल इंक्रीज। तो जेतरो वाटर कंटेंट इंक्रीज करि जबो, जो तमरो स्टोन बा बोल्डर पीपल्स रो साइज टा डिक्रीज करि जबो ना, बुझा पड़िबो नेबे, है ना। यस सर। यस Here सर। it would be semi-liquid state, right? It would be semi-liquid state, but this would be liquid। ये पूरा liquid रहिबो। जो mud flow टा इटा liquid है जो पूरा, तेणु एक कंफ्यूज हबनी। डेब्रिस फ्लो रे बड़ बस अल्प टिके ओदा टाइप रो रहिबो, है ना। जो डेब्रिस स्लाइड सॉरी फ्लो रे कोन रहिबो, लाइक सुजी टाइप रो, हलवा टाइप रो रहिबो। मड फ्लो रे पूरा कंप्लीटली लिक्विड, ये पूरा लिक्विड है जो, बुझिपारछनी। कहले वाटर परिमाण बहुत ही ज्यादा अधिक, सेतमे लिक्विड है कि माने बही जो पूरा जाको कुछ मड फ्लो। So these are the basic difference हम इधर दिखाएगा कि debris flow, mud flow is over। Then as for creeping, the next as for तुम्हारा creeping। creeping अर्थात कौन, suppose ये गोटे ground अच्छी, एटे गोटे electric pole अच्छी। The electric pole was straight enough। हमें देखते थे the wires, जो wires जाइची ये माने सबू, ये जो pole टा पूरा straight एमती अच्छी। बट 5 वर्ष 6 वर्ष पर देखिबो पोल टा टिके टिल्टेड ही जाइची, पोल टा टिके tilted है, it's a little bit tilted। तो this
तेणु करके ये केमिति हैला बिकॉज ऑफ द क्रीपिंग ऑफ सॉइल कहना क्रीप अर्थात कौन बहुत धीरे धीरे इरोजन होची बहुत ही ज्यादा धीरे जहाँ को नोटिस करी होनी पर दैट वुड बी नोटिस फ्रॉम द पिलर ए पिलर को देखले जना पड़ची धीरे धीरे टिल्ट होची ता अर्थ सॉइल इज क्रीपिंग दैट इज व्हाई दिस वन आल्सो टिल्टेटिंग ये टिल्टेट करूची done everyone so tilting because of the what creeping and that creeping why because creeping because of the आमे कहबा water जो सेटा creep करूची that one is creeping done so this is what creeping है ना तो ये रहबो तमरो इरोजन बा मास वेस्टिंग रो हमें टाइप देखि देले हे जो एबे समझते Yes, sir. है ना दिव्य बुझा पड़ुची ना अमन बुझा पड़ुची yes sir बुझे पड़छ देन आमे देखबा ड्रेनेज पैटर्न टिके पढ़ेबी तापर तुमको डेविस बैंक खाली पढ़ेबी है ना फिजिकल जो सैटरडे संडे रे डेविस बैंक पढ़ेबी तो एबे आमे देखबा ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न आगे सिस्टम देखिबा तापर पैटर्न देखिबा आगे ड्रेनेज सिस्टम देखिबा आमे ना तुमको ड्रेनेज सिस्टम और पैटर्न भितर डिफरेंस कोन आगे देखा तो ये होची बेसिक डिफरेंस देखो ज्योग्राफी मु जीएस रे भी पढ़े ऑप्शनल भी तो एतिकी डेप्थ रे तमे जीएस रे पढ़े हबनी नाउ सिस्टम कोन पैटर्न कोन आकु आगे जानिबा पैटर्न कहले ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट of river and its streams by tributaries तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ हमें कहबा स्ट्रीम मेन स्ट्रीम प्लस तार ट्रिब्यूटरीज तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को कहा जाए पैटर्न देन व्हाट इज सिस्टम ताले कोन सिस्टम होची सिस्टम रेफर्स टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीम एरे तमर कोन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट of streams this is the system so when we say system that is the origin and development of stream when we say pattern geometrical arrangement of stream and its tributaries basic difference बुझा पड़ जो है ना Yes, sir. now we will go through first system एबे में first systems देखिबा कि रिवर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम रो टाइप्स हमें देखिए चले हमें सिस्टम को पढ़िबा पैटर्न को जीवानी फर्स्ट वी विल गो थ्रू द सिस्टम ना सिस्टम इज टू टाइप्स सिस्टम होची टू टाइप्स वन वुड बी sequent one would be insequent ना बुझा पड़बनी one is sequent one is insequent done to all Yes, sir. ना sequent रो अर्थात कोन insequent रो अर्थात कोन तो ये देखो हमें सिस्टम ना sequent रो मीनिंग कोन कोन कहितले मु तमन को एनीवन sequent अर्थात which follows the slope the river which follows the slope this would not follow the slope insequent कहले the river that does not follow the slope ये river कौन करे does not follow the slope है ना does not follow the slope so this one does not follow the slope but this will does follow ये कौन करेगा follow the slope done this will follow the slope ये ला sequent insequent
ना फास्ट वी विल गो थ्रू द सेक्वेंट सेक्वेंट को एबी हमें डिवाइड करवा ना सेक्वेंट को डिवाइड कले अच्छा এটা সমস্ত বুঝা পড়ছে না কাউকে তো ডিফিকাল্ট লাগুনি না সেকোয়েন্ট को Yes, ডিভাইড sir. করলে ফার্স্ট ইট উইল বি কনসিকুয়েন্ট sequent then b consequent sequent under first वाला consequent then subsequent then obsequent and last ରହିବ ତମର resiquent ये ରହିଲା ତମର 4 टाइप का अंडर है subsequent टाइप अंडर है ना दैट मीन्स ए 4 टाइप्स को हमें गोटे गोटे पढ़िबा फास्ट से कहछि consequent तले ए रे थिला हम देखितले consequent ना consequent कहले मेन स्ट्रीम आपको मध्य हमें कौन को मेन स्ट्रीम कहले फास्ट जी ओरिजिन होता है फास्ट टू बी originated fast to be originated है ना fast to be originated then comes to the subsequent है ना then आसीबा में subsequent ध्यान से देखियो then आसीबा तमरो subsequent ताले subsequent रे में कोन देखिथिले कहले second to be originated second to be originated कहले after the mainstream origin hella pore that means they are tributaries there were tributaries the tributaries also called as the subsequent stream कहले secondary ये होची fast ये होची second done everyone Yes, sir. then as for C type obsequent कहले opposite direction opposite direction कहले कौन this obsequent also a type of consequent ध्यान से देखिबो obsequent is a type of consequent but difference होची कौन for example भाबो एटा गोटे हिल अछि river A origins and moves in this direction river B origin and moves in opposite direction both are consequent but जदि आको में consequent one धले this one also consequent है ना but B is flowing opposite direction of the A hence B also a consequent but ये कौन ऑब्सेक्वेंट रिवर रे जो कारण ये ऑपोजिट रे जाउची बट इट्स अ कॉन्सिक्वेंट रिवर किंतु से ऑपोजिट डायरेक्शन रे फ्लो करूची सेथे ताको ऑब्सेक्वेंट को आजे है ना बुझा पड़िबो Yes, sir. Yes, sir. then comes to the resiquent resiquent रो मीनिंग कोन कि ई रिसेंट ओरिजिन है सिंपल मुके भी रिसेंट ओरिजिन कहले बहुत ही एबे एबे ओरिजिन है ना ओरिजिनेटेड मच लेटर कंपेयर टू द जदि हम कंपेयर करिबा एबे एबे ओरिजिन है सेथिबा ना रिसेंट कहले रेसिक्वेंट और सिंपल तुम लिखिबो रिसेंट ओरिजिन कहले जेतरा हम कंपेयर करूचे कॉन्सिक्वेंट को यार एज बहुत ही कम एबे एबे ओरिजिन है बुझि बछनी तो आ द्वारा एबे एबे ओरिजिन है फॉर एग्जांपल तुम कहबो कोन गोटे नुआ रिवर हमको छोटिया रिवरटा गोटे ओरिजिन है महानदीर गोटे नुआ ट्रिब्यूटरी दे वुड बी रेसिक्वेंट तो दिस वुड बी द कॉन्सिक्वेंट सबसिक्वेंट ऑब्सिक्वेंट रेसिक्वेंट रो मीनिंग हे जो ना इथरे घर डाउट अछि Yes, sir. देन कम्स टू तमे इनसेक्वेंट को आसीबा एबे हम देखबा इनसेक्वेंट insequent करे that does not follow slow
does not follow slope. हाँ कि नहीं? That does not follow slope. अच्छा তাহলে এই ফ্লো কু ফলো করে নাই ସେଥିପାଇଁ ତା ନା তাহলে କୋଉ ସ୍ଲୋପ অরিজিনাল স্লোপ ফলো করে ନାହିଁ that does not follow the original slope है ना डन তাহলে আকু আমি কহু তাহলে আর ডিভিजन করিবা ইনসিকুয়েন্ট রে ए antecedent river B are type 2 superimposed बस टू टाइप होता है antecedent and superimposed ना antecedent अर्थात कौन antecedent अर्थात prior to the land आर मीनिंग antecedent रो मीनिंग होची prior to the upliftment of structure for example जो तुम्हारा हिमालय रिवर अच्छी ना इंडस एंड ब्रह्मपुत्र देयर इज ए थ्योरी कॉल्ड थ्योरी बा मु कहबी हाइपोथेसिस व्हिच बिलीव्स दैट इंडस एंड ब्रह्मपुत्र दे वर ए सिंगल रिवर एमने गोटिए रिवर थिले फॉर एग्जांपल प्रेजेंटली जदि देखबो इंडस इज फ्लोइंग थ्रू द इंडियन पाकिस्तान ड्रेनिंग्स टू आरबियन सी रे जाकि इंडस पडुची ओके नहीं बट ब्रह्मपुत्र कौन करुची आसिकी बे ऑफ बेंगल रे पडुची हाँ कि नहीं हाँ तो मु कहूची ना जदि आमे ताकू देखिबा ध्यान से दिस टू रिवर्स वेर ओरिजिनली ए सिंगल रिवर थिला गोटिए रिवर थिला तुमको कौन पे बिकॉज इंडस कोठी ओरिजिन हेची एठू टाइबेट रु ब्रह्मपुत्र कोठी ओरिजिन हेची सेई टाइबेट रु राकास लेक हाँ कि नहीं जो आम कहे तो गोटे जगह जस्ट डिफरेन्स हूँ के 10 to 20 किलोमीटर्स मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स भाव से भितर दीटा रिवर ओरिजिन है तो इट इज बिलीव्ड दिस रिवर्स वेर ए सिंगल रिवर थिला तो जेते बळे आमर हिमालय फॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक से रिवर को एमाने कौन कले फ्रैगमेंट करदेले तेणुक रिवर एबे अपोजिट डायरेक्शन को फ्लो करवा स्टार्ट कला अदरवाइज ए रिवर गोटे रिवर थिला ना बुझा पड़ोनी मो कह कथा Yes, sir. तो बिलीव करा जाए ना एबे ध्यान से सुनो नाउ दिस रिवर्स ये जो रिवर ये तो सिंस द दैट मीन्स दिस रिवर्स एग्जिस्टेड बिफोर द हिमालय ये तो हिमालय पूर्व अच्छी हिमालय परे ओरिजिन हैला दैट मीन्स एंटीसीडेंट रिवर से रिवर व्हिच exist prior to the upliftment of the structure एटी स्ट्रक्चर कहले हिमालय ये ता पूर्वरु अछि जो रिवर एई भलिया रिवर को कुआ जे एंटीसीडेंट रिवर कहले हिमालय फॉर्मेशन हवा पूर्वरु से अछि तेणु एई भलिया रिवर को कुआ जे एंटीसीडेंट रिवर ना बुझा पड़िबनी ना तुमको सर जानी भी केमती बिकॉज दे विल फॉर्म डीप जॉ जेमती इंडस जॉ तमरो सांगपो जॉ ये माने डीप जॉ फॉर्मेशन करिवो तेणुक से डीप जॉ को देखिले जना पड़ कि हाँ दिस रिवर्स प्रायर टू द लैंडफॉर्म फॉर्मेशन अदरवाइज डीप जॉ कहीं फॉर्मेशन कला जदि ये हिमालय फॉर्मेशन परे ही था तो हिमालय साउथ रु आसी था एपट को ट्रेन ही था हाँ कि नहीं Sir, it is simply माने antecedent माने before the formation of Himalayas. हाँ जी किंतु खाली हिमालय तो ने बिनी ना एटी हिमालय रे एग्जांपल से अदर कौन सी माउंटेन थाई पारे है ना सो बेटर टू से बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर टा हिमालय ही पारे कि आउ कौन सी माउंटेन कौन सी देश रे ही पारे बट इन केस ऑफ इट वुड बी इंडिया रे हिमालय बुझ पछ नहीं ना तुमको कहली मु इंडिकेशन कौन तुम कह केमिति जानबो इट्स एंटीसीडेंट रिवर दे विल मेक डीप जॉ
jaw, these are the what, like this these are valleys है ना. ଯେମିତି Indus jaw, the deepest jaw of India, what, Indus jaw, ହଁ କି नहीं. कारण तुमको ये jaw केमती फॉर्मेशन है. माउंटेन सपोज 2 सेंटीमीटर बढ़ुची से रिवर 2 सेंटीमीटर काटिबो ताकू, सो द दी पट साइड रे माउंटेन ऊपर को उठी जो मझरे रिवर ता बाट काटी की जाउथिबो, तेणु करी केठी जॉ फॉर्मेशन हैला और वी से वैली फॉर्मेशन हैला ना. बुझा पड़िबनी. Yes. डन. So this kind of rivers called as the antecedent river. India case रे जदि तमे कहबो any river origin from Tibet, any river origin from Tibet is an antecedent river, is an antecedent river. Done everyone. Any river origin Yes, from sir. Tibet is an antecedent river. That could be tomorrow Kali river ही परे, that could be tomorrow Satluj ही परे, कहना Satluj टा टाइबेट रू आसुची, हाँ कि नहीं. ताले सतलुज गोटे एंटीसीडेंट्स थ्रू द सिपकिला पास इट एंटर्स टू इंडिया. ताले सतलुज कथा नहीं जो, इंडस कथा नहीं जो, ब्रह्मपुत्र कथा नहीं जो, एंड ऑल्सो अदर रिवर्स, दीज आर ऑल्सो व्हाट, एमान को कहुए एंटीसीडेंट रिवर ना. बुझा पड़िबनी. देन कम्स टू द सुपर Yes, sir. इम्पोज्ड. देन आम देखा सुपर इम्पोज्ड. सुपर इम्पोज्ड रो मीनिंग अर्थात कौन, लाइक अच्छा एंटीसीडेंट तबे बुझीगल है ना. Yes. ना सुपर इम्पोज्ड कौन, सुपर इम्पोज मु कहती ये जो रीजनल स्ट्रक्चर थाए, अच्छा मु कहूँ शुण, सुपर इम्पोज रिवर केमती होता है. सपोज भाव ये हूँ इंडिया, इंडिया रो जो लैंडमास अच्छी जहाँ को मैं कहे बेसमेंट, सेटा कौन को रॉक, को रॉक कह बेसमेंट ऑफ इंडिया, को रॉक कह आर्कियन रॉक, दैट वुड बी आर्कियन रॉक है ना. कहले सब ओल्डेस्ट रॉक. भाव ता उपरे तुम फॉर्मेशन है डेकान प्लेटू, कौन फॉर्मेशन है डेकान प्लेटू फॉर्मेशन है, हाँ कि नहीं. ताले डेकान प्लेटूटा न्यू ना आर्कियन टा न्यू, डेकान प्लेटू इज ए न्यू वन ना. बुझा पड़िबनी. ताले डेकान प्लेटू होची ओल्ड रॉक उपरे एटा गोटे न्यू रॉक ना. बुझा पड़िबनी मो कहया कथा. डन एवरीवन. Yes. Yes, sir. Now what will happens, let's say गोटे रिवर एठी origin है कि जाउची, the river will cut across this Deccan plateau, new rock को से erode कर देला. erode कला परे the river is now flowing over the Archean rock, कहले old rock ऊपर flow करूची. But this old rock is so hard, compact, river is not able to erode that one. Now the river is flowing over the old rock, the new rock is eroded. এই ভলে স্ট্রাকচর को कहुए सुपर इम्पोज्ड. दैट मीन्स रिवर जोठी जाउची तार आख पाखरे जो रॉक अच्छी ता सहित किसी नवा दवा ना, तले जो रॉक अच्छी तारी ऊपर जाउची, दैट मीन्स नुआ रॉक को से काटिकी ओल्ड रॉक सहित से फ्लो करूची ना. बुझा पड़िबनी है ना. बुझी पारियो ना. बुझा पड़िबनी. So the river is that means flowing over the old surface. Done. Done everyone. है ना. Sir, ठीक है Yes, sir. आपको. मु कहले लेट्स से इंडिया अच्छी ये इंडिया रो जो बेसमेंट रॉक था दैट इज आर्कियन रॉक, जोड़ा की ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक. लेट्स से दिस वन इज योर डेक्कन प्लेटू, जोटा की न्यू रॉक, बोले ओल्ड रॉक ऊपर न्यू रॉक अच्छी. Let's say imagine Narmada is flowing like this and other rivers flowing across the Deccan. But what they will do, they will erode the new rock को खत्म कर दबो and they will flow over the old rock. ना बुझा पड़बनी एबे. Yes, They will sir. flow. So this kind of river called as superimposed river.
Done. This kind of river called as superimposed river. ଏବେ ହେଇଯିବ superimposed river. yes, ନା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା river capture. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ ପଢେଇଦେବି river capture. ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟା ପରେ ଦେଖେଇଦେବି ପ୍ୟାଟର୍ନ ତ କମ ବେଶୀ ତମେ ପଢିଥିବ ନା ପଢିନ yes sir ପଢିଛୁ। ତ ମୁଁ ରିଭର କ୍ୟାପଚରଟା ପଢଉଛି କାରଣ କ୍ୟାପଚରଟା ତମର ପଢା ହୁଏନି ଜିଏସ୍ ରେ ସେଇଟା ଆମେ ଅପସନାଲରେ ପଢୁ ରିଭର କ୍ୟାପଚର ନା ରିଭର କ୍ୟାପଚର କେମିତି ହେଇଥାଏ ଆମେ ଦେଖିବା सर रिवर कैप्चर टा माने ड्रेनेज सिस्टम रो गुटे टाइप्स की सर ନା ନା ଏଟା टाइप्स ତ ଆମେ टाइप्स କୁ ଯାଉନି ଏଟା ରିଭର କ୍ୟାପଚର ଗୋଟେ ସେପରେଟ ଟପିକ ଆମର କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ଆମର ଏଠି ଡିସ୍କସ କଲେ ସିଷ୍ଟମ ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ହେଲା ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ରିଭର କ୍ୟାପଚରକୁ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ପଢେଇଦେବି ସେଇଟା ଛୋଟିଆଟା সেটা সমস্তে জানিছ ট্রেলিস প্যাটার্ন রেক্টাঙ্গুলার প্যাটার্ন সার্কুলার প্যাটার্ন এসব পড়ি না ରେଡିଆଲ pattern। বুঝিপারছেন তো ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଡ୍ରେନେଜ କ୍ୟାପଚର କ'ଣ ରିଭର କ୍ୟାପଚର କ'ଣ ରିଭର କ୍ୟାପଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ରିଭର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରିଭରକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଦେବା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ହିମାଲୟ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ହିମାଲୟ river one river is flowing like this ये गोटे river flow करुची तार tributaries एमती आसुची tributaries another river is flowing here ये तार कुआडे भी जाउची river B ठीक अछि ना river A this one is river A ध्यान से देखाओ and this one is what reach ये होची तमरो mountain रो reach ना बुझा पड़िबन काकू mountain टाइम एमती थाए ना माउंटेन रो Yes, अपोजिट sir. साइड रे से जाउची ना दिस वन इज ये तमरो रहला 1 2 these are the tributaries ये सब कोन tributaries these tributaries are very fast flowing tributaries ए माने बहुत फास्ट फ्लोइंग ते माने इरोजन करी करी इरोड करी करी ये काटी 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 एठी एसी टच करी छिबो जदि ये ट्रिब्यूटरीज एठी एसी टच करी गला ना ये जो रिवर फ्लो करूथला तारा दिस पोर्शन ऑफ वाटर विल नाउ डाइवर्ट टू द रिवर ए आ बुझा पड़िबनी this portion of water will now कौन river A को डाइवर्ट ही जिबो ना बुझा पड़लानी सर आउ थरे टिके से डायग्राम टा मैं कहली this one is river A is flowing and river B is flowing river A is having tributaries like this है ना these tributaries they will cross the mountains and touch the river B so that river B रो water एबे river A को transport है जिबो ना बनी yes sir आकु भी कुआजे स्ट्रीम पायरेसी आकु भी कुआजे स्ट्रीम पायरेसी स्ट्रीम पायरेसी अर्थात हमारा वाटर को ये कैप्चर कर देला पायरेट्स बुझी पड़छनी तो এই ভଳିଆ कंडीशन এই কাকু কুआजे रिवर कैप्चर তাহলে তা ପାଇଁ कंडीशन কোন कंडीशन जानिया बहुत जरूरी তাহলে रिवर कैप्चर ପାଇଁ कंडीशन कोन कंडीशन हैला ताले दीटा रिवर दरकार दैट मींस हमें केबा टू रिवर्स है ना देन आउ कोन रहबो ट्रिब्यूटरीज रहइबो ऑब्वियसली ट्रिब्यूटरीज रहइबो एंड ट्रिब्यूटरीज शुड बी फास्ट बुझि परछ कि नहीं देन स्टीप स्लोप रहिबा दरकार स्टीप स्लोप नहले हबनी स्टीप स्लोप रहिबा दरकार तो दीज आर द कंडीशन रे जति हमें देखबा स्टीप स्लोप रहिबा दरकार है ना स्पीड हवा दरकार डीप वैली हवा दरकार आउ कोन हवा दरकार डीप वैली तो दीज आर द कंडीशन जति ये कंडीशन अछि ताले रिवर कैप्चर हबो है ना ना बुझा पड़िबनी yes sir यस सर
ଏବେ ଭାବ ତାହେଲେ ତମକୁ କେମିତି ହୁଏ ଭାବ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ Sir, ରିଭର ଯାଇଛି mountain ରହିବା compulsory କି? ମାଉଣ୍ଟେନ ନ ରହିଲେ ହବ ନାହିଁ ତ mountain ବି conditions ଗୋଟେ ହବ? ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରିଭର ଅଛି ଲେଟ୍ସ ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ତମର ଏଠି ଗୋଟେ ରିଭର ଏ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରିଜ ଏଠି ଅରିଜିନ ଆସିକି ଏ ରେ ମିଶୁଛି and this one is steep slope steep slope ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ତମର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଏ ଅଛି ଆର ଇରୋଜନ ରେଟ୍ ଅଫ ଇରୋଜନ ଅଧିକ ହବ ରେଟ୍ ଅଫ ଇରୋଜନ ଅଧିକ ହେଲେ ସିନା ଆକୁ କାଟି 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 ଏପଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ନହେଲେ କେମିତି ହବ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଷ୍ଟିପ୍ ସ୍ଲୋପ୍ ଦରକାର ଡିପ୍ ଭ୍ୟାଲି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏପଟେ ଯୋଉ ରିଭର ଆସିବ ସେ ତାକୁ ସେ ଟଚ୍ କରିଦେବ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଟଚ୍ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଏ ପୋର୍ସନକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଲା ଏ ୱାଟରକୁ ଏପଟକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲା ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ୟାନ୍ ଇଟ୍ would be elbow ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିବ ଆଗେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡ୍ର ଇଏ ଏମିତି ଯାଉଥିଲା ଏମିତି ଥିଲା ଆର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଯାଇକି ଏମିତି କନେକ୍ଟ କରିଦେଲା now this water is now transported into the A river ku आसीगला B रो ताले आकु को आजे elbow ए जो तुम्हारा एंगल टा फॉर्मेशन हला this would be elbow capture बोली को आजे तो ये upper part रो water now transport into the A now जेहेतु A को water transport है गला ए point को आजे elbow point जो point रे capture कला ताकु को आजे elbow point है ना now water supply होतला ये रिवर ना दिस रिवर वुड बी ड्राई रिवर किछि पोर्शन ड्राई हे जिवो होल पोर्शन ड्राई हबो नहीं तुमके कोन पे एठी भी किछि ट्रिब्यूटरीज अछि एठी किछि ट्रिब्यूटरीज सो दिस पोर्शन दैट वुड बी वाटर बट दिस पोर्शन वुड बी ड्राई जो पोर्शन ता तार ड्राई हे जिवो ताकू को आछिवो विंड गैप दैट वुड बी विंड गैप है ना होल रिवर ड्राई हबो नहीं ना बुझा पड़िबनी Sir, elbow point ଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ କହିଲେ। सिंपल मु कहली ये रिवर एमती जाउची ये रिवर ए आर ट्रिब्यूटरी जे केमती कैप्चर कला तो एटा को शेप रो देखाउची एल्बो शेप रो तणु आपको कहा जाए एल्बो है ना ए जो शेप टा को कहा जाए एल्बो ना बुझा पड़िबनी ताको कहा जाए एल्बो कैप्चर केना एटा को कैप्चर करला वाटर आड़ को ट्रांसपोर्ट हे गेला ना एठी किछि हेचो ए रीजन टा पे ड्राई हेचो जो रीजन टा ड्राई हैला सेटा विंड गैप और जोटा कैप्चर करला हेटा एल्बो है ना कहना को बी हेडेड कर देला ना यस सर है ना तो ये है एल्बो कैप्चर एंड रहा विंड गैप आउ गोटे हमें देखा मिसफिट जो विंड गैप को भी कहा जाए कोल COL ताकू विंड गैप और कोल कहे देन आसो मिसफिट है ना तो एथरे किछि वर्ड मु कहि दउची फर्स्ट है तमरो एल्बो कैप्चर देन आसो विंड गैप और कोल देन आसो मिसफिट elbow point elbow capture ଦିଟା ଯାକ सेम देन आसो मिसफिट ताले ध्यान से देखो रिवर ए रिवर बी ए र ट्रिब्यूटरी जाइकी बी सहित मिसी गला लेट्स से दिस पोर्शन दिस अपर पोर्शन ऑफ बी वाटर इज नाउ ट्रांसपोर्टेड टू ए सो दिस पॉइंट इज एल्बो आपको एल्बो कैप्चर और एल्बो पॉइंट भी कहि परिबो ना बी वाज गेटिंग वाटर फ्रॉम दिस पोर्शन तो बी ए वाटर आसुथला एमती जाउथला तो दिस पोर्शन वुड बी ड्राई नाउ कोन पे कना ए वाटर टा आसी परुनी तुमको सर रेस्ट पोर्शन कहीं ड्राई होनी कना एठी आउ किछि ट्रिब्यूटरी पानी दउची सो दैट दिस लोअर कोर्स ऑफ द बी रिवर विल हैव वाटर ना जो पोर्शन टा वाटर न रहबो ताकू कहवा जे कोल और विंड गैप दाबे बुझा पड़िबनी yes ना जो पोर्शन रे वाटर रहिची ताकू कहवा जे मिसफिट डन डन एबे तुम कहबा को मिसफिट काहे को आ जाए कारण ये जो पोर्शन वैली जाको कैप्चर करिछि एटा वाइड हे जिवो और एटा नैरो रहिबो
सो दैट ये आ सहित फिट हो नहीं तेणुक आपको कहुए मिसफिट सर कोटा न्यारो रहिबो आथरे देखिले कहले लोअर पोर्शन ऑफ द कैप्चर्ड रिवर विल हैव narrow valley upper portion of the captured river will have broad valley है तेणुक आपको ब्रॉड आउ नैरो दीटा मिसफिट होची ना फिट होनी दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मिसफिट डन Yes, sir. एल्बो पॉइंट बुझी पारिबो विंड गैप अच्छा विंड गैप टाकू ठीक अच्छे विंड गैप डन ये रहा तुम दैट वुड बी जोटा कहले रिवर कैप्चर देन रिवर टाइप्स को आसी जब आमे टाइप्स ता तो बहुत इजी टाइप्स रे कौन पढ़ी थे टाइप्स कहले टाइप्स तो इजी ना कहि परिबो एथरे को पैटर्न आसीबो ट्रेलिस पैटर्न आसी परिबो डेंड्रिक पैटर्न आसीबो डेंड्रिटिक DNDRITIC डेंड्रिटिक पैटर्न देन आउ कोन आसी परिबो तमरो रेक्टेंगुलर रेडियल पैटर्न रेडियल देन आसीबो कोन सेंट्रीपेटल देन सर्कुलर देन आसीबो तमरो पिनेट देन आसीबो तमरो लास्ट तमरो बारबेड BARPED बारबेड तो एतिके टाइप रो हमको पढ़ा हबो तो काली मु टिके हिमान को डिटेल रे डिस्कस कर देबी एते किछि एक्स्ट्रा हम देखिबा जीएस रे जोगुडा मु पढ़ै नथली पैरेलल पैटर्न आउ गोटे दीटा हेरिंगटन पैरेलल पैटर्न आउ किछि नुवा पढ़ै देबी जोटा तोन जीएस रे पढ़ाइनी एक्स्ट्रा इथरे हमें पढ़ि देबा सेंट्रीपिटल